Good morning, students. Hope you all are fine and studying well at your home. So we started with chapter 5, working of institutions. If you all remember and you all are really paying attention, you all would be remembering this. We started with the introduction of the chapter, and then I did the topic that how is a major policy decision taken, under which I discussed about what is an office memorandum. Okay, if you all remember that we discussed the procedure, that what is an office memorandum. Okay, after that I came to the next topic, that was the decision makers. So herein I talked about that who takes decision, like so many laws and rules and regulations or policies are made. Who takes all these decisions? These decisions are made by the legislators. Legislators are the people who sit in parliament, right? So all the decisions are taken by the people who are sitting in the parliament, and parliament consists of what? Parliament can be at two levels, state level and central level. So at state level we have legislative assembly. We may also have legislative council, but this arrangement is not in all the states. And at central level we have Lok Sabha and Rajya Sabha. So under this, if you remember, we studied that president is the head of the state and prime minister is the head of the government. So you always need to remember this differentiation. And parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. And the house, that is prime minister, he must have the support of a majority of Lok Sabha members. Then finally we studied the procedure of office memorandum, how is a bill introduced and then it becomes an act. Finally when the order is passed, that order is called as office memorandum. Then we got to know about what are the needs for political institution, and finally today I will start with parliament. What is a parliament? Parliament is a place which houses the legislators, wherein the legislators, I am not saying legislature, I am saying legislator. There's difference between legislature and legislator. लेजिस्लेचर का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा, ये लेजिस्लेचर है, वहां बैठने वाले क्या हो गए? लेजिस्लेटर. Okay, so parliament basically, what is the procedure? If you remember, how was the office memorandum passed? All the people involved, that is called as, those people are called as legislators and they sit in parliament. So in the example of the office memorandum, do you remember the role of the parliament? Perhaps not. Even the author at times feel that you people don't remember what is taught in the class, isn't it? Anyways, so since this decision was not taken by the parliament cannot take a decision. Parliament is a place where the lawmakers sit. Okay, so exactly the decision was not taken by parliament. It all started with Mandal Commission report. Okay, prime minister then sat with his cabinet, then the accurate bill has to be introduced. If it bill receives the majority of support, now that bill receives the support of whom? The support of the people who are there in the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, when that bill is passed, that bill becomes an act. So why do we need a parliament? In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. कोई भी डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. अब इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री. इफ़ वी थिंक कि हम यहाँ पे पर से बैठ के डिसीजन लेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी भी गिवन डे पे कोई वेन्यू पे द एंटायर पॉपुलेशन दैट इज़ more than 1 billion, that will there's no place which will be able to accommodate this huge amount of population. और इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन, इतने कॉन्फ्लिक्ट है हमारी कंट्री में कि कोई एक डिसीजन पे हम लोग आ ही नहीं पाएंगे अगर हमने ये सोचा कि एक एक करके पर से हम डिसीजन लेंगे. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीता वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और वो क्या करेगा? वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेगा. सो इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट. तो ये दो लेवल पे हो सकता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल में दो हाउसेज हैं, ये मैंडेटरी है, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, एंड स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेज हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी.
Central level it is mandatory. Legislative assembly, legislative council. This has to be there. This is the discretion of the state. In our country, in our country, how many states have both the houses? How will you remember this? Remember like this with a short form. Karnataka, Uttar Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar. These 6 states have both the houses, legislative assembly and legislative council. So parliament is the final authority for making laws in the country, because legislators sit there. So who is going to make the laws? The law will be made by the people who are sitting there. This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislatures. Parliaments all over the world can make new laws. So what can they do? They can make something new which was never there. Okay, like RTE. It came into existence, 86th Amendment Act 2002. 1st April 2010 it was enacted. Article 21A, it was never there. So it made a new law. It can change existing laws, whatever is existing. Maybe there is something wrong. If you hear if you listen to news very carefully, Hindu Succession Amendment Act. Daughter has all the right in her father's property. It does not matter because the law was passed in year 2005. It does not matter whether the girl was born before 2005 or after 2005. Even if she was born in 1995, the litigant or the petitioner cannot claim that 2005 में ये एक्ट आया था. तो एग्जिस्टिंग लॉ को आप चेंज भी कर सकते हैं. आर्टिकल 370 रिवोक्ड, आर्टिकल 35A रिवोक्ड, 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, 35A right to property which was not given to the people who were staying over there. If a girl married outside the state, her property rights were lost. But if a girl came to the state after marrying, her property rights were intact. All these have changed. They have been taken back. They have been abolished. So these can be done. Also they can make new ones in their place. So Article 370 was revoked. Jammu and Kashmir, which was a state, has now become a UT. So there are changes in the laws. These all things are done by the parliament. Parliaments all over the world exercise some control over those who run the government. So parliament in short controls the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy the support of the parliament. The support of the parliament means to be in government, to rule the people, you need to have a number of seats required to form the government. Say if the number of seats required to form the government is 250, in the year 2019 BJP came with this number. But through some reasons if this seat is lessened, अगर ये सीट कम हो जाती है, अब ये 250 पूरे 5 years तक रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जीत गए तो अब कम हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That is called as support of the parliament. Parliament controls all the money that governments have. Government के पास किसका पैसा है? Government के पास हमारे टैक्स का पैसा है. तो पार्लियामेंट के पास 3 फंड्स होते हैं: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स. तो ये जो हमारे टैक्स का पैसा है ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेजिस्लेटर्स कंट्रोल करते हैं. कहाँ स्पेंड करेंगे ये सारा पैसा? दिस इज मेंशन्ड व्हेन द बजट इज इंट्रोड्यूस्ड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ स्पेंड करेंगे ये टैक्स मनी, दैट इज मेंशन्ड इन द बजट. Those who run the government can take decisions. Okay, this was done. All the money the governments have. In most countries, the public money can be spent only when the parliament sanctions it. So that happens in our case also. Only when the parliament sanctions, the money can be spent. And I told you that how the money is sanctioned. The money is sanctioned when the budget is introduced. Okay, so the budget is introduced. 3 session होते हैं पार्लियामेंट के: विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन. तो बजट सेशन में बजट इंट्रोड्यूस होता है, फिनेंस मिनिस्टर करते हैं, एंड देन इट इज डिसाइडेड. जितनी भी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो सब हमारे टैक्स मनी से मिलती है. ओके, सो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज, नेशनल पॉलिसीज. ये जितने डिबेट डिस्कशंस होते हैं, बिल इंट्रोड्यूस होता है तो डिबेट होगा ही, डिस्कशन होगा ही. इट ऑल टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट. 2 houses of parliament. I have already told you there are 2 houses of parliament.
Okay, the first and the lower house is Lok Sabha, the upper house is Rajya Sabha. Lok Sabha is House of People and Rajya Sabha is Council of States. Rajya Sabha is the upper chamber and the Lok Sabha is lower house. Lok Sabha is the directly elected house. After every 5 years Lok Sabha election takes place. Keep in mind. Okay, तो लोक सभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है. In our country, the parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of States and the House of the People. The President of India is a part of the parliament. He cannot be a member of either house, na Lok Sabha, na Rajya Sabha. That is why all laws made in the houses, they will come into force or they can only be called as act when the President sign it. ताकि President biased ना हो. वो ना लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं ना राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं. ठीक है. You have read about the Indian Parliament in earlier classes. Now this is what his author is assuming. Okay, but actually you don't remember. So now this is your job. You need to find out the answers to all these questions. What is the total number of members? Who elects the members? I'll tell you, it is we, the people, who elect the members. What is the length of the term? Find it out. Can the house be dissolved or is it permanent? So you have studied all these things. I remember. Because I'm teaching, I know, since 8th standard to an extreme level, these things are explained to you people. Find it out and we'll discuss it when we'll meet. Okay. Which of the two houses is more powerful? So it might appear that the Rajya Sabha is more powerful. That's the reason it is called as upper chamber and the Lok Sabha is called as the lower house or the lower chamber. This does not mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. This is just an old style of speaking. हमने ब्रिटिशर्स से ले लिया सारा कुछ, तो वहाँ पे ऐसे ही बोला जाता है, तो इसीलिए हम उन्हें कॉपी करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन इज अपर और लोअर. Our constitution does not give the Rajya Sabha some special powers over the states, but on most matters the Lok Sabha exercises supreme power. दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी एंड मनी. ओके, ऑर्डिनरी लॉज और ऑर्डिनरी बिल्स आर दोज जिससे फाइनेंसेस का कोई लेना देना नहीं. ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउसेज, बट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्य सभा. An ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, the final decision will be taken in a joint session. Ordinary bill में भी अगर differences हैं तो एक joint session होगा. Joint session का मतलब होता है दोनों हाउस साथ में मिलेंगे. President address this house. अब क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स लोकसभा के हैं, more than 500, तो ऑफ कोर्स किसका से होगा? लोकसभा का होगा. Come to the next, money matters. लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर. जैसे ही लोकसभा से बजट पास हो जाता है या आपका ये मनी बिल या फाइनेंस बिल पास हो जाता है, वो राज्यसभा में जाता है. राज्यसभा कैन नॉट डू मच विद इन 14 days. इट हैज़ टू सेंड द बिल. इट मे नॉट सेंड इफ इट डजंट वांट. दे कैन सजेस्ट चेंजेस इफ दे वांट, बट द टोटल प्रेरोगेटिव इज ऑफ लोकसभा. वो चाहे तो राज्यसभा के चेंजेस को एक्सेप्ट करें, वो चाहे ना करें, एवरीथिंग इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ लोकसभा. इफ आई स्पीक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, राज्यसभा हैज नो से इन मैटर्स ऑफ मनी बिल. ओके, कम टू द नेक्स्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लोकसभा कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, ये 3 रिंग्स होता है. डू यू रिमेंबर? आई टॉट यू इन स्टैंडर्ड 9th. आई फील आई डोंट रिमेंबर स्टैंडर्ड 8th और आई डोंट रिमेंबर मच, बट आई हैव टॉट यू. तो ये इनर रिंग है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, राइट. फिर ये इनको असिस्ट करते हैं और ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं. ऑल्दो ये एग्जिस्ट करे ना करे डजेंट मैटर. द मोस्ट इज PM विद इज कैबिनेट. ये सारे मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज वंस, जिन्हें आप डेप्यूटी मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो भी इसी में आते हैं, 3rd रिंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर. जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसका जो लीडर है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है. If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, no confidence motion सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. By the name itself it means the people who are sitting in the parliament, other than maybe your party, they don't have confidence in the working style of the government.
आपकी जो नीतियां हैं वो देश के लिए सही नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो एक मोशन इंट्रोड्यूस होता है। मोशन इज अ प्रपोजल विच इज मूव्ड इन द हाउस। तो एनी प्रपोजल विच इज मूव्ड इज अ मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अ प्रपोजल विच सेज दैट आई डोंट बिलीव इन द वर्किंग स्टाइल ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगर ये मेजोरिटी से पास हो गया, लोकसभा इज dissolved, it comes to an end. And that is why it is said that all ministers including the prime minister have to quit. Parliamentary language में इसे कहते हैं लोकसभा swims together and sinks together. ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा does not have this power. इसीलिए तो राज्यसभा is a permanent house and लोकसभा is a temporary house. 5 years से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, वो डिसॉल्व नहीं होता है। कम टू द नेक्स्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है सेकेंड ऑर्गन है डेमोक्रेटिक कंट्री का, ये दो में डिवाइडेड है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वही हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट में समझ रहे थे, एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर द सिविल सर्वेंट्स। Prime Minister, President, they all are political executives, and permanent executives are the bureaucrats or the civil servants. Okay, so executive is the second organ of the government, and that is divided into two. Why is it called as executive? Because they are in charge of the execution of the policies of the government. Now, what is political and permanent executive? In our country, the category of executive is divided into two. One that is elected by the people, they are called as political executive, जो बिग डिसीजंस लेते हैं, और सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का फिक्स्ड टेन्योर है 5 इयर्स, इनका फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, दे आर इन द सर्विसेज टिल रिटायरमेंट। IAS IPS 5 इयर्स के लिए थोड़ी ना IAS बनते हैं, दे आर देयर इन द सर्विसेज टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। अब दे रिजाइन इज अनदर थिंग। ओके, सो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज एंड दे आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट्स। They remain in office even when the ruling party changes. Political party के change होने से इनके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। These officers they work under political executive and assist them in carrying out day-to-day administration. So permanent executive they rely on political executives they rely on permanent executive because they cannot keep roaming around and they don't mingle much with people as much as the bureaucrats do. Every day they have to mingle with the people, they have to talk to people, and they are much more accessible than the politicians. So people go to them, speak to them. So these bureaucrats deliver that what is actually needed to improve the system or the development of the country. Okay, so non-political executives and political executives, that is political and permanent executive. Now you may ask, why does the political executive have more power? Why is a minister more powerful than the civil servant? इतना रिगरस एग्जाम दे के ये लोग आते हैं, सिविल सर्विस सर्वेंट मोर एडुकेटेड है, उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा है। ओके, बट द पॉइंट इज दैट द एडवाइजर्स हु आर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री दे नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। दिस इज ट्रू। वी हैव मिनिस्टर्स लाइक लालू यादव, नीतीश कुमार यादव एंड तेज प्रताप यादव। what can we expect from these kind of people? Okay, but the point is why do we give more power to political executives? क्योंकि political executives elect होके आए हैं, ये select होके आए हैं, एग्जाम प्रोसेस से आए। हम जिनको elect करते हैं उनको हम ज़्यादा accountable मानेंगे, उनको हम ज़्यादा पावर देंगे। Okay, that is basic understanding. The minister is elected by the people, so he is ruling on the behalf of the people. So who will be answerable? It is the minister who will be answerable. So minister will take the decisions. Ministers will decide the framework and the objectives and the laws. That's the reason political executives are more accountable than the permanent executives. Come to the next, Prime Minister and Council of Ministers. Prime Minister is the most important political institution. डायरेक्ट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिलती है उसके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो जो मेजॉरिटी, जिस पार्टी ने मेजॉरिटी के सीट जीते हैं, प्रेसिडेंट उसके लीडर को अपॉइंट कर देगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। कोalition पार्टी भी बन सकती है, कोalition आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। If a single political party is unable to secure the number of seats required to form the government, 2 or more parties come together to form a government. तो वो पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें किसे अपना फेस देना है,
who will be the face of the party. The president appoints the person most likely to secure a majority support. So if you see from here, the president appoints the leader of the majority party or the coalition of party that commands the majority in the Lok Sabha. In case no single party, मान लीजिए कोई single party को या alliance को majority नहीं मिली, तो president appoint कर लेगा एक probable candidate को जो इन्हें लगे कि इनको majority support मिल जाएगी. By the time they have some time, they can prove their majority. प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर नहीं है. वैसे तो हम कहते हैं कि लोकसभा का 5 years का टेन्योर है, बट आई माई सेल्फ एक्सप्लेन्ड यू दैट द हाउस, दैट इज द लोअर हाउस, कैन बी डिसॉल्व्ड. इसीलिए वी से दैट ही डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और coalition party. I have already explained you what is a coalition government. Okay, so if we come over here, we were talking about prime minister. Okay, so if we come over here, he continues in power so long as he remains the leader of the majority party. जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मेक्स फॉर हिमसेल्फ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The Prime Minister is free to choose any minister as long as they are members of parliament. In fact, अगर आप member of parliament नहीं है, आप, मैं, कोई भी, who is above 25 years, लोकसभा के member बनने के लिए यही criterion है, can become a council of minister. लेकिन within 6 months he will have to secure his seat either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It has usually 60 to 80 ministers. 15% of the total strength of the house is Council of Ministers, जिसमें सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. मैंने आपको बोला दिस इज लाइक अ रिंग. ये रहे 3, इसमें बीच में PM the first, the second and the third ring. The first ring is the closest ring to prime minister is cabinet ministers. ये टॉप लेवल लीडर्स होते हैं जिनको पोर्टफोलियोज मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ लेते हैं. तो ये इनर रिंग हो गया, द क्लोजेस्ट रिंग टू द PM. इसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं. नेक्स्ट होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो यूथ होते हैं, जो डायनामिक होते हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर फील्स कि अगर इन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले तो आगे चल के ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं. Okay, so they are usually in charge of smaller ministries and they participate in the cabinet meetings only when specially invited. और cabinet ministers तो part होते ही हैं. The third one, ministers of state, ये attach किए जाते हैं cabinet ministries से to assist and help them. Because it is not practical for all ministries to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meeting. इसीलिए parliamentary democracy को बहुत सारी countries में cabinet form of government भी कहा जाता है. The cabinet works as a team. Ministers के views different हो सकते हैं, opinions different हो सकते हैं, but they have to abide by all the decision. कोई भी minister government के डिसीजन को ओपनली हाउस में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है. हर मिनिस्ट्री की एक सेक्रेटरी होती है, दैट इज बेसिकली सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट्स आर हु असिस्ट देम एज सेक्रेटरी. सेक्रेटरीज इनको नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं सो दैट दे कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब ये कैबिनेट एज अ टीम, तो इनको जो असिस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी एज अ टीम वो हो गए कैबिनेट सेक्रेटरीट. तो कैबिनेट सेक्रेटरीट में कौन होंगे? ऑल द सिविल सर्वेंट्स. So this is all for today. I'll complete the chapter in the next class. We are left with powers of the Prime Minister, the President and the Judiciary. So we'll be done with this lesson. By that, please study well and try to listen to news. That will in fact enhance your polity. Okay, thank you and have a nice day.